Well, Recording in progress. again, a very good afternoon, everyone. Let's start today's session. The last class we had finished, like where I've given you a homework. Accept a character. I think my screen is visible to you all now. Okay. Now you remember the logic that we had used for the printing of characters in binary. We have taken a for loop. I'll just rewrite that code on which we will be doing the reversing part. You remember this one, right? So what this was doing, we were taking from the 7th bit. Oh, just 1 minute. I forgot to get the. Just give me 1 minute. Yeah. So what we were doing here, we were trying to this I equal to 7, I greater than equal to 0, I minus minus. So what we were doing, we are trying to find out the value for this particular bit, right? So now see, when you find the value for this bit 0, when we reverse it, this will go where? This will go to the, this is the 7th bit, right? Now 7th bit will go to 0. Similarly, this is what? This is 6. When you reverse it, this will go where? This will go to 1. So isn't it 7 minus I? The position when we are getting, isn't it going to 7 minus I? Please tell me if you're not understanding somewhere. When you reverse, the one that is in 7 will go to 0. The one that is in 6 will go to 1. The one that is in 5 will go to 2. The one that is in 4 will go to 3. 5 will go to 2. Do you understand what I'm saying? Can I get some response, please? Yeah, thank you. So here, what we can do now, we can take a for loop, right? Now we can take a for loop, similarly, same one we are telling. Main function. Now we are taking a character ch. In this case, we will reverse it. So I'll take an integer variable s which I'll initialize with 0 and remaining जो था उसको वैसे ही रहने देंगे हम लोग, ठीक है, I और k. Now we say for same I equal to 7. Now I greater than equal to 0, I minus minus. Now what we are doing, we say k equal to 1 left shift I. इतना तक हमें समझ में आता है because we have already done this much. Now let me just wipe out this part. Okay. So that we can
understand what is happening and we will do it. Can you see the video of one video getting on, students? Just see how many people are so, I mean, keen to do the class. कोई पेड़ के नीचे क्लास कर रहा है, जो जहां भी मिला वहां क्लास कर रहा है ना, धन्य हो गई मैं। कोई सीढ़ी में क्लास कर रहा है, बेटा घर जा फिर क्लास कर। और ऑफ नहीं कर पाएगा रेहान, he is out of the class now, he can't join today's class anymore because I have not enabled waiting, there is no you can say allow directly people join, no? So once I remove somebody, the person won't be able to join the class anymore. क्लास इसको करना है ना, और रास्ते पे घूमेगा नहीं, समझे ना, कहीं पे जाके बैठ जाएगा पेड़ के नीचे। अच्छा, तो हम जो बोल रहे थे, not to waste any more time. Now say we are writing, somebody has entered A, right? The value of CH has been entered as, suppose, capital A. Now how it will be represented internally? This value will be represented internally as 1. This will be internally represented as 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, right? ये ठीक है। Now if I write the bit patterns here, let me write the bit values here. Okay, जो भी bit values इसके हैं, so ये आपका 7, ये 6, ये 5, ये 4, ये 3, ये 2, ये 1, ये 0, समझ में आया? ये बिट के वैल्यूज हैं। Now when we are writing here, when we are writing here the like CH and K question mark, ठीक है? That means we are trying to print the particular value. So what we are doing here, then first value you are going to print here is how much? First value you are going to print here is this one, 0, ठीक है? ये 0 फर्स्ट प्रिंट आएगा, तो 0 उल्टा होने पे कहां जाएगा बताओ? 0 जब उसको उल्टा करेंगे तो 0 यहाँ पे जाएगा कि नहीं? यहाँ जाना चाहिए। तो 0 का वैल्यू, प्लेस वैल्यू अब क्या होगा? उसका बिट कौन सा पोजीशन में आएगा? 0 में आएगा, राइट? सो इफ द वैल्यू इज नॉन जीरो, देन ओनली यू आर गोइंग टू ऐड। हमें निकालना क्या है? आपको समझ में आ रहा है हमें निकालना क्या है? वी नीड टू रिवर्स इट एंड फाइंड आउट द वैल्यू। तो वैल्यू कब आएगा? जब 1 आएगा वैल्यू। इफ इट इज अ 1, देन ओनली वी आर गोइंग टू कैलकुलेट इट। इफ इट इज 0, वी आर नॉट कैलकुलेटिंग इट। सो इफ इट इज अ 1, हाउ मच यू आर कैलकुलेटिंग? सपोज द नेक्स्ट वैल्यू, ये 1 आया आपका, ठीक है? तो ये 1 में आपने क्या कैलकुलेट करना है अभी? 1 इंटू 2 टू द पावर हाउ मच? इजंट इट 2 टू द पावर 1? ये जो 6 था, ये 6 का आपका 1 आ गया। 6 कौन सा पोजीशन में? ये 6 कौन सा पोजीशन में आ रहा है? 1 पोजीशन में आ रहा है। तो ये किसके साथ मल्टीप्लाई होगा उल्टा होने में? 2 टू द पावर 1 के साथ। प्लीज आस्क मी इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? ये जो 1 यहाँ पे है, ये 1 जब रिवर्स होगा तो कहाँ पे आएगा? इधर आएगा। सो व्हाट इज द बिट पोजीशन हियर? दिस इज द 6th बिट हियर, दिस इज द 6th बिट हियर। रिवर्स करने पे ये कौन सा बिट में आता है? 1 बिट में। ऊपर लिखा है ना बिट वैल्यूज, ये कौन सा पोजीशन में आ रहा है? 1 में आ रहा है कि नहीं? अंशुमान, अंकित, और एक कौन था? कुड यू अंडरस्टैंड?
Anshuman, I seriously don't understand what you are not able to understand here. अरे बॉस, ये जो 1 है, ये 1 का तुम्हारा कौन से बिट में है? ये 6 है। इसको जब तुम उल्टा करोगे, ये जो उल्टेगा तो ये किधर आएगा? इधर आएगा ना। इधर जब आएगा तो इसका पोजीशन क्या होगा? 1 होगा। समझ में आ रहा है? ये 1 होगा। तो ये इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे? ये 1 into 2 to the power 1 होगा। समझ में आ रहा है? सिमिलरली बाकी चीज जब रिवर्स हो रहा है, जैसे तुम्हारा नेक्स्ट 0 है, मैं इसको यहाँ पे लिख देती हूँ, बाकी चीज आपका 0 है, तो ये आपका ये 0 होगा। ठीक है, फिर ये भी 0 होगा, फिर ये भी 0 होगा, फिर ये भी 0 होगा। ओके, ये भी 0 होगा। जब तक 0 हो रहा है हमें कुछ नहीं करना है। ये वैल्यू क्या होगा? दिस विल बिकम 1, राइट? सो व्हेन दिस विल बिकम 1, अगेन व्हाट यू आर हैविंग, अगेन आज दिस विल बिकम 1, ये जो 1 है ये कहाँ पे आएगा तुम्हारा? ये जो 1 है ये इधर आ गया, तो ये 7, राइट? सो दैट मीन्स इजंट इट 1 into 2 to the power 7? अंशुमन समझ रहे हो अभी? ऑल ऑफ यू आर अंडरस्टैंडिंग? So can we write the code like this should be equal to, आप डायरेक्ट पावर कर सकते हो कि ऐसे भी लिख सकते हो, like we say s plus equal to 1 left shift 7 minus I. s अगर ये वैल्यू नॉन जीरो है, मतलब अगर ये 1 है, तो किसके साथ ये मल्टीप्लाई, किसके कौन सा वैल्यू अडॉप्ट करेगा? 7 minus I. ये देखो, ये जो 0 है, ये जो 1 है, ये 6 है, कहाँ पे गया? 1, ठीक है, 6 कहाँ पे जा रहा है? 1, isn't it 7 minus 1? सिमिलरली तुम्हारा जो 0 है वो कहाँ पे आ रहा है? 7, isn't it 7 minus 0? सॉरी, isn't it 7 minus 7? Got it? So this is what we are doing it. हम लोग उसको रिवर्स कर रहे हैं, तो उसका रिवर्स पोजीशन कैसे पता चलेगा? 7 minus I कर देंगे डायरेक्टली। तो अगर जैसे कोई वैल्यू है आपका 0 1 1 0 1 1 0 1, ऐसा कुछ वैल्यू है, ये रिवर्स होके क्या बनेगा? 1 0 1 1 0 1 1 0, ये बनेगा। समझे? लेट मी जस्ट राइट द let me just write the place here. So this is 7 6 5 4 3 2 1 0। ठीक है, कैलकुलेट कैसे करेंगे इसको? समझ में आ रहा है? कैलकुलेट कैसे करेंगे इसको? अब देखो, जैसे जो 0 ये 1 है 6 पोजीशन में, हाँ ये 6 पोजीशन वाला, तो तुम्हारा जो 6 में था वो कहाँ पे गया? 1 पे गया। Isn't it 7 minus 6? ओके, दिस इज जो आपका 5 में है वो कहाँ पे गया? 2 में गया। Isn't it 7 minus 5? जो आपका 4 तो नहीं है, 3 है, वो 4 पे गया, 7 minus 3। जो आपका 2 है वो 5 में गया, isn't it 7 minus 2? ठीक है, यहाँ पे ये उल्टा हो गया, दिस इज 7 minus 6, दिस इज 7 minus 0। Could you understand now? और जो आपका 0 पे था वो कहाँ पे गया? 7 में गया, दिस इज 7 minus 0। तो अगर ये पोजीशन, ये उसका जो रिजल्टेंट प्लेस वैल्यू है, इसमें हमें मल्टीप्लाई करना है, तो 1 पोजीशन में जब 1 फर्स्ट माने 1 बिट पोजीशन में 1 रहे, उसका वैल्यू क्या होता है? 1 लेफ्ट शिफ्ट दैट मच। 2 में रहता है 1 लेफ्ट शिफ्ट 2। तो ये 2 कैसे निकाल रहे हैं? 7 minus 5।
So understood this part? Okay, बाहर आके all we need to do is printf percentile d s return 0. समझ में आया? इसको करके देखें. तुम लोग सुन रहे हो कि सो गए? So should we do it? Okay. ये देखिए. So what I'm doing here, I'm taking one character variable. क्या है? ch. ठीक है, पहले आपको बाइनरी करके दिखाऊंगी, फिर आपको रिवर्स करके दिखाऊंगी मैं. These questions are very important. That's why I'm taking so much of giving you so much of time. Bitwise से बहुत सारे जगह पे questions पूछते हैं. So that is why it's required to understand this. अच्छा, अब क्या लेंगे हम लोग? एक int I लेंगे, एक k लेंगे. ओके, ये खाली रिवर्स करने का है. Now we say printf enter a character, right? Now we will accept it. We say scanf percentile c address of ch. ये हो गया, एक्सेप्ट हो गया मेरा. अब क्या करना है? एक फॉर लूप लेना है. तो वी से फॉर i इक्वल टू 7. क्यों? कैरेक्टर है. i इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, i माइनस माइनस. So here we say k1 left shift I. Okay, then we check ch के साथ k को चेक कर देते हैं. अगर ये आपका नॉन जीरो है तो 1, अदरवाइज 0. ठीक है, यही हमें करना है. रन करके देखते हैं. एरर एक्सपेक्टेड सेमीकोलन. कहाँ छोड़ दिया मैंने सेमीकोलन? ऊपर नीचे कुछ रह गया शायद. जस्ट अ मिनट. सुजीत सर इज कॉलिंग. यस सर. अनिश. Okay, parenthesis was missing. देवदत्त, आई शिफ्ट 1 कैसे हो सकता है? 1 शिफ्ट आई सेम कैसे हो सकता है तुम्हारा? बताओ. तुम 7 को एक लाइट में शिफ्ट करोगे तो 111 में 0 ऐड करेगा. 1 को 7 को शिफ्ट करोगे तो एक के बाद 7 जीरोस देगा, 128 बोलेगा. Isn't it? I mean, पूछने से पहले सोच तो लो क्या पूछ रहे हो. ठीक है, एंटर अ कैरेक्टर. सपोज कैपिटल है, मिला 100001. ओके, अब इसको हम लोग कैसे करेंगे? रिवर्स करेंगे. हाँ, सम
तो वी टेक अ सम हियर, सम इक्वल टू 0। नाउ मैं ना इसको यहाँ पे रख रही हूँ, 10 प्रिंट करने दीजिए, उसके साथ सो देन आपको दिखेगा। हाँ, उसके साथ हम लोग उसका निकालेंगे वैल्यू। Then we write here sum plus equal to 1 left shift 7 minus I. Otherwise it will be same as, कुछ ऐड नहीं होगा। अगर 0 हुआ तो कुछ ऐड नहीं होगा, अगर 0 नहीं है तो ऐड होगा। सेम ए, वो मैंने प्रिंट नहीं किया, सॉरी, आई हैव नॉट प्रिंटेड इट। printf percentile d a 130. Got it? Could you understand? How 1 into 1 left shift 7 minus I, स्वराज जो आपका बिट वैल्यू 7 था वो जब रिवर्स होगा वो जाके 0 में पहुंचेगा ना, जो 6 होगा वो 1 में पहुंचेगा, जो 5 होगा वो 4 2 में पहुंचेगा। हम तब तो रन करके वही दिखा रहे थे आपको। ये इधर इधर दिख रहा है ये वाला चीज, ठीक है। शुड वी डू फ्यू मोर क्वेश्चंस? बहुत लोगों का कंप्लेन है मैडम प्रोग्राम नहीं करा रही है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। नाउ I'll show the code once. Okay. I will do that. Code देखने दो थोड़ा सा, no, then I'll do that. See, the first one is to print the, this one is to print the binary, okay, and this one is to reverse. It will print the binary and then do the reversal. आप कोई भी नंबर लेके देख सकते हो। अगर खाली रिवर्स पूछा है, then this one should be commented. Understood? This is to print the binary. Done? Okay. Now going back to the question, बहुत easy है. Let's do this. ये हमारा कितने नंबर का क्वेश्चन है? This is our probably question number 1, 2, 3, 4. Question number 4 is this. When everything is occurring for an even number of time, like twice, 4 times. I want the solution. I want the code. Okay. Write the code and send it to me.
एक साथ लिख के डालो थोड़ा जल्दी. यस यू कैन यूज एरे, नो प्रॉब्लम. एरे में इनपुट दिया है ना, तो यू हैव टू यूज एरे. वेरी गुड. सॉर्टिंग की तो यहाँ जरूरत ही नहीं है. Subhasmita, why are you using a string? I don't understand. Now this is the Ayaskanth. Why are you using a string unnecessarily? अच्छा यहाँ पे नहीं है. सॉरी सॉरी सॉरी, ये तुम्हारा पुराना था स्ट्रिंग. सॉरी. Almost people who are giving it correct. If you write it into different functions, it will be better. बार बार बोल रही हूँ, एक एक लाइन करके टाइप मत कीजिए. दूसरे का डेटा अंदर आ रहा है. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कंप्रेहेंड व्हाट यू आर राइटिंग. देन कोई चेक तब कर सकता है ना, जो आपका आंसर पूरा पढ़ेगा. हाँ सर. हम्म. ना ना, आपण टिके तांको कहनांती से जे आसीबे, कारण फुल लोड थिले ही सिस्टम रे लैग करूची. फांका सिस्टम रे लैग नहीं करियो. बुझे पारे कोन कहूची. जूम रे आमे जते बेले काम मु जते टिपिकली जूम रे क्लास नोची, मोर बेले बेले स्क्रीन टा पूरा अंधार हो जाउची, माने डिस्प्ले ड्राइवर प्रॉब्लम देखोची. एटा स्टार्टिंग रो होता टिपिकली. Yeah, most of you are doing it right. Very nice. So now what we are doing, see, whatever are the values, they are in even, right? तो अब देखो यहाँ पे अगर हम लोग इस वैल्यूज को लिखना शुरू करें, सॉरी ऐसे 32 इसी को लिखते हैं. हाँ, 32 देन 15 18 45 15 32 18 XOR 18 XOR 18. Okay, this is the number, this is the value that has been given to us.
Now, what we will do, this particular one, when we are doing an XOR operation, what will happen here when you do an XOR operation? Now, say 32, and if there is another 32, it will cancel. Last class हमने पढ़ा था, है ना? Similarly, एक 18 दूसरे 18 को cancel करेगा, ये 18 को cancel करेगा, 15 को cancel करेगा, बचा क्या? Understood? हो गया? Now, can you please tell me, Rajesh, what is the requirement to do so much of mapping here? When we can do something simply, why should we go for map? What is the requirement of doing so much? Is it required? आपने hash map लिया है. What is the requirement of taking a hash map when we can do it using this? this सोहन तुमने count करके किया है. It's not required, no. We can simply write the code like this. Let me know if you're not understanding. This is to find out how many elements are there. हम लोग XOR ही use कर रहे हैं राजेश. We can use नहीं, you should use this. Unnecessary hash map. Why do you use? It will take double the space, no, to store it. It's not required. समझ में आ रहा है आपको what I'm saying? When you're doing a hash map, you are storing the value with the occurrences in a mapping. Naturally, time भी ज्यादा लगेगा तुम्हारा, क्योंकि तुमको map maintain भी तो करना है. Whereas we are just doing one scroll here, isn't it? तो ये faster हो जाएगा ना अपना. Srishti, we are doing this because we do not know what is the number of elements that we have in the array. So that is why this is size of the array is how much? How many elements are there? 3, 3, 6, 3, 9. 9 4s are 36. 36 bytes by 4. सृष्टि समझ में आया आपको? हाँ, सोहन देखो, जो भी वैल्यूज है इवन ऑकरेंस है ना. इवन ऑकरेंस माने each number must be available either twice or 4 times or 6 times, and we know that x or x cancel, it becomes 0. तो हमने वही किया. देखो 32 जब भी 32 आएगा वो नल बना 0 बना देगा. 15 जब भी 15 आएगा 0 बना देगा. समझे? तो जितने डबल इवन होंगे सारे 0 बन जाएंगे. सिर्फ जो ऑड होगा वही बच जाएगा. Got it? Now let's go to the next question. और एक करेंगे. ओके, तीन पर 45 नहीं,
तो 3 बार होगा तो 2 बार 45 कट के तीसरे बार 45 ही आएगा ना। 3 बार चाहिए तो तुझे देख यहाँ पे, ये 45, ये आ गया 45, हो गया। अब देखो तुम्हारा ये जो 45 है, ये 45 45 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा। समझे? ऑल द एलिमेंट्स आर इवन, ओनली एक ही एलिमेंट है जो आपका ऑड है। समझ में आ रहा है? दैट इज द क्वेश्चन। Naturally, XOR of 2 will give it as 0. Next question. Missing number. Find the missing number. You have been given a list of n minus 1 integers. Okay. N minus 1 integers are given. Actually, it has how many elements? N. When suppose 10 है, तो आपको 9 integers दिया होगा. One element is missing from that 9, and they are a list of continuous values. Please do understand, this is a list of continuous value. देखो 1 2 3 4 6 7 8 लिखा है, 5 is missing. Got it? तो if the size, या ये समझ लो, फिर हम आपको कोड देंगे. कोड मतलब ऊपर वाला कोड दिखा देंगे. Now if this is this one particular one, इसमें टोटल कितने वैल्यूज है? 7 है. तो आपका साइज ऑफ द अरे मैंने कितने एलिमेंट्स हैं? 8 एलिमेंट्स हैं. समझ में आया? 8 एलिमेंट है. 8 एलिमेंट से आपका 7 एलिमेंट गिवन है, 1 एलिमेंट मिसिंग है. इट कैन बी द हाईएस्ट एलिमेंट आल्सो, प्लीज डू रिमेंबर. एंड दिस मे नॉट बी इन अ सॉर्टेड ऑर्डर आल्सो. ठीक है. वन ऑप्शन इज यू कैन फाइंड सम ऑफ द नंबर्स, जितने भी वैल्यू है, जैसे 8 है, 8 into 9/2 करके आप उसका सम निकाल दोगे, फिर इसका सम करके सब्ट्रैक्ट करोगे. टेल मी, दैट इज वन मेथड. If any other method you know, then tell me any faster method. This is the code. कौन कोड मांग रहा था? विनीत वंजा. ये वाला क्वेश्चन रन करके दिखा देती हूँ मैं आपको. देखो, this is the code that we have written last program. 45. Got it? 45. Now the next code question. Recording stopped. Sorry. Recording in progress. Please write the solution for the next question. ये बेसिक क्वेश्चंस आज करेंगे, इसके एडवांस क्वेश्चन थोड़े दिन बाद करेंगे. ठीक है. ऑपरेटर पहले खत्म करके थोड़ा आगे पढ़ेंगे, because based on this we'll be having 2 lab tests. इजी वे बताओ जिससे ये निकाला जा सके.
आकाश, the number of elements that you're having here is unknown. array का size नहीं दिया है, समझे? And that input will be given by the system. हम लोग जब इसको ऑनलाइन कोडिंग चैलेंज में करते हैं, then input will be given by the system. So we never know how big an array is input. So how do you know it? Size of the array by size of each element. That is what we are doing. It's an integer array. So size of the array by size of integer करने से it will show you the total number of elements that is available. समझ में आया? That is why we are doing this. No, array is not sorted. इनपुट ही तो दिखा रहा है आपको, सैंपल इनपुट में ही दिखाया है कि अरे सॉर्टेड नहीं है, है ना? सम मेथड इज फास्टर, अदर मेथड स्लोअर हो रहा है. सॉरी. तुम लोग एक बेसिक चीज भूल जा रहे हो कि हम लोग पढ़ किस क्या रहे हैं. What we are studying and what we are trying to implement. एक बात बताओ, अगर अरे कंप्लीट होता तो वैल्यू क्या, ये कितने का तक का है? 8 का अरे है, ठीक है. सो वैल्यू वुड हैव बीन 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट? ये if the total value is given, then it will be this much. ठीक. इसका सम जो भी है आपने सम निकाल दिया, ठीक है. इसका सम जो है, इसका सम क्या है? This is 8 into 9 divided by 2, 36. ठीक है. गिवन डेटा क्या है? 1 2 4 6 3 7 8. Okay, given data is this. ओके. अब एक चीज बताओ, अगर हम लोग इनको एक्सोर कर दें तो क्या होगा? इंस्टेड ऑफ डूइंग अ सम, अगर हम लोग एक्सोर वैल्यू लेंगे तो क्या होगा? नेचुरली एक्सोर इज फास्टर देन सम, राइट? तो हम लोगों ने क्या किया ना, इसको सम नहीं लिया. व्हाट वी हैव डन, वी विल डू अ एक्सोर ऑफ दिस. प्लीज लिसन टू मी केयरफुली. वी विल डू अ एक्सोर ऑफ दिस. तो एक लूप लेके हमने इसको एक्सोर कर दिया. यू ऑल एग्री विथ मी दैट इंस्टेड ऑफ एडिशन, मैं आपको एडिशन करके दिखाऊंगी एंड यू विल सी दैट एक एक्सोर और एडिशन में फर्क क्या होता है. ठीक है. ये सपोज इक्वल टू आपका एक वैल्यू हुआ a, ठीक. इसको फिर एक्सोर कर देंगे. विल डू अ एक्सोर हियर. विल डू अ एक्सोर हियर. ये सपोज आपका b हुआ. नाउ टेल मी व्हाट विल बी a XOR b. ये क्या होगा बताओ तो थोड़ा सा. व्हाट विल बी a XOR b?
Isn't it the missing number? ये एक मिसिंग नंबर होगा कि नहीं होगा, बताइए मुझे। जैसे देखो इन दोनों को जब सॉल्व कर रहे हैं तो ए बी में ए के साथ कैंसल्ड, राइट, बी टू टू के साथ कैंसल्ड, फोर फोर के साथ कैंसल्ड, दोनों को एग्जॉर कर रहे हैं ना, पूरा एग्जॉर हो जा रहा है। 3 5 नहीं जाएगा, 3 है 3 के साथ कैंसल्ड, 6 है 6 के साथ कैंसल्ड, 7 7 के साथ जाएगा, 8 8 के साथ जाएगा, तो ऑब्वियसली बचेगा कौन, द वन विच इज नॉट रिपीटेड। समझ में आया ना? Isn't it a faster method than what you all are doing, finding the sum? You are telling n into n plus 1 by 2, that is faster. Second one तो you have to do it, no? Second one तो you will do it. I'm not telling it's a lower complexity, but when you see, when you bring it down to the level of calculation, addition takes a lot more time than doing a XOR. इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है एडिंग विदाउट यूजिंग एडिशन ऑपरेटर, सोहन, वो मैं आपको करके दिखाऊंगी, तो उसमें कैसे कैरी वैल्यू ऐड होता है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, हाफ ऑर्डर प्रिंसिपल यूज होता है उसमें एडिंग में। ओके, तो कैसे क्या होता है दैट आई विल शो यू। पहले ये वाला कर दें हम लोग। अच्छा, लेकिन एक चीज मुझे बताओ, इफ आई वांट टू डू XOR, then I must have an initial value with which I am doing XOR. हम लोग if it is माने initial value का 0 लो 1 लो, value change हो जाएगा ना, तो what we need to do, we must take one XOR which is so yes, we take the first value. That is what we are doing. In the first case, we are starting the first value. In the second case, we are taking from the next value because we are taking one already. ठीक है, वी आर टेकिंग वन ऑलरेडी, और एल्स आप सिंपली 0 से लेके कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो लूप है ये कोई जरूरत नहीं है, इसको 0 ले लो, इसको भी 0 ले लो और पूरा को एग्जॉर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, करके देखते हैं इसको। ठीक है, जीरो लेके भी आराम से हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेट मी जस्ट run it and show it to you. I hope you can understand what is happening. दीपंकर एक चादर वादर ले लो।
how you are doing, Yash? I have actually skipped your code. Can you please put it so that I can check? इसको ना हम लोग सिंपली ऐसे भी कर सकते हैं. We can simply take it as 0. Take this as also 0. ठीक है, कोई जरूरत नहीं है कॉम्प्लिकेशन बढ़ाने का, हम लोग एकदम सिंपल सी कर सकते हैं. 1 से लेने की भी जरूरत नहीं है, हम लोग जैसे नॉर्मल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है. 0 से लेंगे. एक्चुअली इसका वैल्यू तो 1 से है, 0 से नहीं है. इसका ये वैल्यू 1 से है, 0 से नहीं है. This is even if you write 1 0 कोई फर्क नहीं पड़ेगा. Okay, now I think this is sorted. This is y को 0 1 से लेंगे, I less than n plus 1, I plus x2 equal to x2i. Yes, this will also hold good, does not matter because देखो यहाँ पे ये आपका array का वैल्यू जो है वहां से ले रहा है. Like this is not required. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए. सी simply absorb the values and then find out, nothing else. सेकेंड वाला लूप देखो. सपोज मेरा अरे का साइज 5 है. ठीक है, माय साइज ऑफ द अरे, यहाँ पे अरे का साइज कितना दिया है? 3 2 5. सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होगा? 6 होगा. ठीक है, कृष्ण प्रसाद फॉर यू 6 होगा. तो हमने क्या किया ना, 1 से 6 का कोड नॉट वर्किंग. मैं तो रन करके आपको 3 दिखाई ना. 1 प्लस हम लोग देखो i इक्वल टू 1 ले रहे हैं, 1 से लेके n प्लस 1. ठीक है, यहाँ पे अरे का साइज 5 है, तो 5 प्लस 1 कितना? 6. ये है एक्चुअली, समझ में आया? तो 1 प्लस 2 ऐसे करते करते लूप में हम लोग कहाँ जा रहे हैं? 6 प्लस जा रहे हैं. 1 नहीं, ये एक्सॉर है, सॉरी. 1 एक्सॉर 2 करके 6 तक का एक्सॉर कर रहे हैं. ये सेकेंड लूप है. ठीक है, फर्स्ट लूप की इसको एक लूप में कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं? आई थिंक इट शुड वर्क. रुको थोड़ा, एक मिनट मुझे जरा ट्राई करने दो. आई थिंक इट शुड वर्क इन अ सिंगल लूप ऑल्सो. हम लोग एक x2 यहीं पे ले लेंगे. लेकिन यहाँ पे ना 2 एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा क्योंकि 0 से हो रहा है. 0 हमें चाहिए नहीं, तो वी कैन से i प्लस 1 से करेंगे इसको. ठीक, बाहर आने के बाद लेट मी जस्ट चेक.
ये काम कर रहा है कि नहीं। ना, एक और एक्चुअली ऐड करना चाहिए इसमें बाद में, n को लेस देन n में जा रहा है ना, x2 XOR equal to n. I think it should work now. This is doing a XOR with 1, 2, 3, 4. N is the size, right? 5. नो नो, इसमें कुछ गड़बड़ है। हाँ राइट राइट, सही बोला। नहीं 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 नहीं, सही है सही है, मैंने गड़बड़ किया था। सही 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 है सही। इट शुड बी n+1. Now it should work. Yes. हाँ हाँ, n+1. अरे पवित्र अगर लेंगे तो अरे का फर्स्ट एलिमेंट तो 0 में होता है ना, इंडेक्स तुम्हारा 1 से हो जाएगा, तो फर्स्ट इंडेक्स विल बी मिसिंग. So this can be taken in a single loop also instead of taking 2, and you can reduce the complexity to this. एक ही बात नहीं है, तुम 0 से लेके लेस देन n करके इसको i+1 करो, 1 से लेके लेस देन इक्वल टू n करके इसको i-1 करो. Isn't it the same thing that we are doing? People, could you understand this? ये हमने क्या किया, ये देखो, this is the array. जरा 1 मिनट रुको. हाँ, तो हमारे पास 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, 6 है. ठीक है, दीज आर द, सो अरे का इंडेक्स क्या है, अरे का इंडेक्स आपका 0, 1, 2, 3, 4, राइट. यहाँ पे हमने क्या किया, वी हैव डन इन द फर्स्ट लूप, वी हैव डन 1 XOR. सेकेंड लूप में क्या किया है, 0 से शुरू हुआ है. ठीक है, सो दिस इज अगेन i+1 माने 1 XOR. दोनों में 0 है तुम्हारा इनिशियल वैल्यू. सो ये 0 इनिशियल वैल्यू, ये 0 इनिशियल वैल्यू. ओके, ये 0 इनिशियल वैल्यू. नाउ सेकंड में व्हाट इज द वैल्यू हियर, 2, ये भी 2, ये भी 2. थर्ड में व्हाट इज द वैल्यू हियर, 4, यहाँ पे क्या आएगा 3. समझे. फोर्थ में यहाँ पे क्या वैल्यू है, 5, यहाँ पे आएगा 4. यहाँ पे क्या वैल्यू है, 6, यहाँ पे आएगा 5. ठीक है, लूप खत्म. वंस यू कम आउट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, द वैल्यू ऑफ n इज 5. लेस देन 5 था, 5 हो गया, तो +1 कितना होगा, 6 हो गया. सो दिस इज द फाइनल वैल्यू ऑफ x एंड y. नाउ व्हाट वी आर डूइंग, वी विल बी, ये आपका कैंसिल हो गया, ये बचा. गॉट इट. हाँ, ऐसे भी हो सकता है सोहन, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन तुम्हारा प्रॉब्लम क्या बताओ तो, इफ n नॉट इन एआरआर लिख रहे हो ना, तो तुम्हारा ये सॉर्टेड एरे नहीं है. तो सॉर्टेड एरे नहीं है, अगर ये 1 2 6 5 4 ऐसे होगा, तो तुम्हारा 3 में ही 1 1 2 6 3 5 ऐसे होगा, तो 6 के बाद आके ना वहीं पे निकल जाएगा. तुम्हारा जो लॉजिक है, लेट मी जस्ट पुट योर लॉजिक. नाउ हिज लॉजिक इज दिस. ठीक है, ही इज टेलिंग दिस. तो अगर यहाँ पे तुम्हारा
अगर हाँ दिस इज n माइनस माइनस, ठीक है कर देते हैं. Okay, now it's telling I in ARR and not in ARR. तो तुम्हारा 1 है वो पूरा, ये डबल लूप ही है, ये डबल लूप ही है. आई का वैल्यू ले रहे हो, एन को चेक कर रहे हो, एन उसमें है कि नहीं. ठीक है, तो 1 को एक बार तुमने चेक किया, 2 को चेक किया, ये तो सॉर्टेड अरे नहीं है ना. इट्स नॉट अ सॉर्टेड अरे. सपोज आपका वैल्यू 1 2 5 3 4 ऐसे होगा, तो पहला वाला मिसिंग हो जाएगा 3, इट विल ब्रेक ऑन दैट. डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? अगर ये क्लियर हो गया हो तो लेट्स तुम रन करके इसको देख लो. अच्छा, now let's go to the increment decrement operator. Next operator, that is increment decrement. ये क्या था, बिटवाइज था नहीं, उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर है, सॉरी. Now assignment operator works from right to left. Okay, the right side or RHS you can write can be a constant, variable, operator, operand combination, non void function call, कुछ भी हो सकता है. Okay, that must result to a value, तब जाके काम करेगा, अदरवाइज काम नहीं करेगा. That must result to a value. Okay, now the LHS can only be a variable, otherwise L value error, ये आपका एरर है. ठीक है, देखेंगे कैसे काम करता है ये. एल वैल्यू माने लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू, और क्या. सपोज वी आर राइटिंग एक्स, suppose we write x अरे okay, suppose we are writing x and what is the problem. Something wrong with this.
थोड़ा सा हैंग हो रहा है. I am unable to write with this. I don't know what is happening. X equal to 10. ये आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. X equal to, suppose there is one int a equal to 15. I can write x equal to a. This is also correct. I can write a plus 6. This is also correct. I can write a function, suppose add a comma b. यहाँ पे और एक b है, इसका वैल्यू 10 है, ये भी हो सकता है. ठीक है. So all these are correct L value, I mean R values. Inside को क्या बोलते हैं? When you write x equal to something, this is called the R value and this is called the L value. Okay. Now this R value can be a constant, जैसे हमने लिखा 5, can be a variable, जैसे मैंने लिखा a, can be a operator operand combination, जैसे हमने लिखा a plus b can be a function call but non void, when it should return something, like हमने लिखा add a comma 6 whatever, ये सब valid है. ठीक है. Now see, whatever value we are getting here, we have learned it in the first class that we need to read this and we need to write to this. Got it? So when you are writing to this must be a variable or not? This must be a variable. मैंने क्या लिखा है वैल्यू के जगह? कुछ और लिखा है क्या? Vinith, have I written something else other than value? Now, this part has to be a variable. Why? Because we need to write to this. We need to write to this. So this x, if you somewhere you are writing a plus b equal to 10, correct in mathematics, but can I write it in a programming language? Can I write it in the programming language? What I was telling is, whenever you write any assignment, a equal to something, this must be calculating to a value. So this value you can get from a constant, you can get from the variable, you can get from the operator operand combination, you can get from the function call. Do you understand, Vinith? So this must be evaluating to a value. This value will be stored to the left hand side value. समझ में? left hand side operand L value. So to whom you can write
Recording in used. progress. Got it? So you got this as a equal to as another operator. So this is 2 and operand is A and this result. This is also 2. So how many are there? 4 ho gaya. Could you understand? This is 2 operators and 4 operands that we are actually dealing with. Is it clear with everybody? Now, when A plus equal to B or A plus equal to B, yeah, A plus equal to B. In this case, how it will be created? This is a single operator. Plus equal to is a single operator. It is like this only. It uses accumulator. Got it? So here you are having how many operators? You have only one operator. Internally कितना हो रहा है? That doesn't matter. Is yes, of course it is faster. ये पूरा आपको ब्रेक करेगा, लोड एंड स्टोर में बने ब्रेक करेगा इसको, समझे? माने दिस विल बी लोड, दिस विल बी ऐड, ठीक है? फिर दिस विल बी स्टोर टू ए, जबकि ये आपका डायरेक्ट एएक्स में ट्रांसफर कर देगा, एक्यूमुलेटर में ट्रांसफर कर देगा. So this will be faster. Shortened operators are always faster. So this is 1, this is 2. Okay, so this is always a faster operation, takes less, faster operation, generates less machine instructions. Instructions लिखा है, ठीक है? But again, when you say A equal to A plus B, we can use in arithmetic operator any you can say operator operands can be anything, right? In arithmetic, any operands can be used. In assignment, the L value of assignment must be same as the L value, the first operand. In the expression that is assigned. That means what? If I'm writing A equal to B plus C, it cannot be written with assignment. Not possible. You cannot write it with plus equal to. It cannot be written. Okay, but if you are writing A equal to A plus B, this A and this A must match. यही बोल रहा है. L value must match, must be same as the first operand. समझ में आया? तब जाके ये हो सकता है. And it has to be a binary operation. Only क्योंकि A binary operations can be assigned. क्यों ओपन कैसे होता है? अगर हमने लिखा like we write A complement equal to B, होगा क्या? बताओ होगा क्या? A complement equal to B, will it work? No. Why? Because you cannot write this. This is unary. A equal to plus B, इसका मतलब होता है सपोज A equal to 10, B equal to 5, A equal to plus 5 बने A equal to 5, plus 5 बने 5, और A plus equal to B बने
a plus equal to 5, that is 15. ध्यान समझ में आया? So this is assignment operator. Now we will have the test for today. Please log in to the ID. बार बार बोल रहे हैं. Already profiling we have started working with. So marks will be 0. If marks will be 0, you will be in trouble. So please you use the email ID that we have used for registration with CDC. Here goes your test for the day. Guys, could you get the question? I'll stop at 4-5. Okay. Just tell me one yes if you have got the question. Okay, good. ठीक है yes मिल गया मुझे. You carry on.
2 minutes more. Why you need the link again? Somesh, what happened to you? Okay, let's stop it. Last call for people to submit it. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Please submit. No more stories after this. I got logged out, I this, I that, I didn't get the link, nothing. I have already given you 10 minutes time. 10. %50 students could not answer the size of row double and long double, which we have done in the class. By default, real number is treated as 80% students have answered it wrong. I seriously wonder what you people do and why should we do these classes if you're not learning, if you're not doing anything.
I have seen few glimpses today, how people are attending class. I've taken a screenshot. This screenshot we will be sending for action. Vinith, your response is rejected only if you are submitting after time. Long double is 10 bytes. क्या तुम लोगों का सेक्शन का क्या लिखा है यहाँ पे? What is written here, Sohan? What is size of long double here? All real numbers क्या होता है? Why you people could not answer this? Should I take it up to the department now? Should I share the questions with the faculties who have taught you programming? What I am doing, that is okay. They have also taught you, no? You people cannot answer this type of simple questions. And you're crying over getting placed in Microsoft, Akamai, this type of companies. Amazon. You claim yourself to be very big coders, and this is what your standard is. Huh? See, I'm not telling it. See what the system says. This is the mark I expect from you all. Nobody, only, I think nobody have scored a full mark. Only 6 have scored 9. आपसे तो दूसरा सेक्शन अच्छा था. लॉगिन करके आप लोग बाहर घूमते हो, सो के क्लास करते हो, समझ के क्या रखा है तुम लोगों ने? All these marks I'm storing with a profile. If I'm not sending it to your parents and with the HOD of your department, let me tell you. You just tell, I mean, उस दिन तुम देखना क्या. And the same thing I'll share with the placement department also. मजाक लगा के रखा है तुम लोगों ने. What do you think? These questions are jokes, huh? And whatever we are teaching are all bogus things. Extension company hai. Question was asked, how many times the hour hand moves in an hour? How come people can make this wrong also? 500 students and 25 students are clearing written. Placement officer जाके हाथ पांव पकड़ रहा है, तब जाके वो बढ़ रहा है. क्या समझ के रखा है तुम लोगों ने? Just because you have paid, just because you are studying here, placement is your birthright. And what type of impression you are giving in front of the company? How can you sleep during a class? And the same student who is sleeping in the class will come tomorrow and say, I'm not getting placed. And I'll be blamed for stupid performance. Now, all of you will write the answer here in the chat box. What happens when a double value is converted to float? This is downcasting. What happens here? What you all have written? Times and again I told you, downcasting is always compiler dependent. मैंने आपको बताया था, if you remember, when you take 8 byte into 4 byte, left 4 ले सकता है, right 4 ले सकता है, depends on the compiler. We told it in the class. What happens in a Boolean data type? Boolean data type you have in Java. How come somebody can make this wrong?
It gives a tautology or a fallacy. True. What is shortened in C programming? Short is the qualifier, int is the data type. Okay. Short क्या है नहीं पूछा है, short int क्या है पूछा है. What is the output of this program? How can you create two variables with the same name? It's not possible. Compilation error. Now what is the output of this? In C, this will give you error because in C, all the variables should be created. इसको जिसने run करके किया होगा, सबका wrong answer आया होगा because it is running on the compiler. But in ANSYS C, you cannot declare a variable within the scope. You cannot. और अगर आप स्कोप इसको अगर आप स्यूडो कोड भी देखोगे तो ए इसके अंदर डिक्लेयर्ड है, बाहर हम लोग एक्सेस कर रहे हैं. It will show the declaration error. This is by rule, but people who are running the code and trying to find the output, उनका आंसर सबका गलत है. Because this code will run. The format identifier %i is used for integer type. What is the size of float double and long double? Float is 4, double is 8, long double is 10. By default, a real number is treated as double. Which is a valid declaration? सारे ही valid है. Short int लिखो because default is integer. Signed int लिखो, only int लिखो, default is signed. Unsigned short भी हम लोग लिख सकते हैं. It's all of the above. Qualifier that may precede float is, float cannot have any qualifiers. It has to be this. See the performance. 137 have scored 5. मैंने 50% you are not scoring. The class average अगर हम लोग देखें तो 5 जा रहा है. किसी भी इसी स्टैंडर्ड क्वेश्चन आने से ना आप कोई भी नहीं क्वालिफाई करोगे. How many will qualify? Only these two, maybe these 2-3 people. कोडिंग भी आएगा. Let me see how big coders you all are और कितने कोडिंग में स्कोर करते हो. Very soon we'll be having coding tests also. कितने competitive coders बैठे हैं यहाँ पे, मैं भी जरा देखूं. How many of you are scoring full? I'll also check there. So here we come to the end of assignment operator. Next class we'll be doing remaining all operators, increment, decrement, and we will complete it. And if time permits, which I don't know, if time permits, we'll start with functions. Thank you. What happened, Prem Kumar? What help you need? Qualifier is like adjective. You try to submit after the response was stopped, Prem Kumar. Nothing can be done with it. Instead of 5 minutes, I have given you 10 minutes time, 9 minutes, with a warning again 1 minute. If you could not submit within that, nothing can be done about it.
Try next class. Next question. Anubhav, qualifier is something like it adds on to the behavior that is defined by the original data type. Something like int, when we say int is in 32-bit, int is of 4 bytes. Okay. If I write a short, it will become 2 bytes. So that is a qualifier which adds on some extra properties to it. Like signed is by default. When you write unsigned, it will drop the signed bit and convert it to the data bit. That is qualifier. What is specifier? The basic data types. Int, char, float, double. These are the basic data types. Issue whenever we are doing an addition, there is a concept of carry. Okay. So in order to find the carry, suppose A plus B you are doing. So the steps are A and B for carry. Then A equal to A XOR B. B equal to carry shift by 1 because carry will move to the next position. These 3 steps are happening for addition. Do you understand? Thank you. Bye-bye.